Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube channel. In the today lecture, I will be discussing about load life relationship and average life. लोड लाइफ रिलेशनशिप और एवरेज लाइफ के बारे में आज आपको बताना चाहूँगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग बताया था ऑन रोलिंग कंडक्ट बियरिंग के बारे में। देखिए रोलिंग कंडक्ट बियरिंग में तीन टाइप के लोड लगे थे, स्टैटिक लोड, डायनामिक लोड और इक्विवेलेंट लोड। उसका मैं एक लोड उठाना चाहूँगा, डायनामिक लोड, जिसको मैंने बोला था कैपिटल सी। कैपिटल सी देखिए, जब भी बियरिंग रोटेट हो रहा है तो उसमें डायनामिक लोड लगेगा, दैट मींस आपका फटीग फेलियर आएगा। फटीग फेलियर होता क्या है? द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस दैट अ बियरिंग रोटेट्स बिफोर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द फटीग फेलियर और द क्रैक ऑफ द रेस और द बॉल्स। तो इस केस में अगर फटीग फेलियर की हम बात करते हैं तो लाइफ की बात करते हैं, फटीग फेलियर की बात करते हैं तो लाइफ की बात करते हैं। तो हमें बियरिंग के लाइफ के बारे में पता करना है। और कोई भी इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में बियरिंग को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द लाइफ ऑफ द बियरिंग। दैट मींस देयर विल बी द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज लाइफ एंड सेकंड क्राइटेरिया दैट विल बी एवरेज लाइफ। दैट मींस लाइफ से हमारा कहने का ये मतलब है कि इफ अ बियरिंग इज सपोज्ड टू रोटेट, that what will be the life of the bearing, what will be the life of the ball. So we will calculate the life, that is called L10, and second one is the average life. That means 50% of the bearing tends to rotate before the evidence of the first fatigue failure crack. तो सबसे पहले लोड लाइफ रिलेशनशिप के लिए मैं देखता हूँ। लोड लाइफ रिलेशनशिप के लिए जो हमारा पहला इक्वेशन है दैट इज दिया गया है L10 is equal to C divided by P to the power n. Here C is again आपका डायनामिक लोड, P is called equivalent load, equivalent load, C is called dynamic load, and here L10 is the life of the bearing, life of bearing in million revolution, in million revolution। देखिए लाइफ ऑफ द बियरिंग को हम दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ मिलियन रिवोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ आवर्स, or in the form of hours, meant to say that how much revolution the bearing or the ball rotates, and in that revolution, in that million revolution, what is the actual number of hours that the bearing has rotated. Here n is called index and it is equal to 3 for ball bearing, and 10 by 3 for roller bearing। आपको पता है बियरिंग, रोलिंग कंडक्ट बियरिंग के दो पार्ट है, बॉल बेयरिंग एंड रोलर बेयरिंग। तो n की वैल्यू आपका 3 होगी और n की वैल्यू आपका 10 by 3 फॉर रोलिंग कंडक्ट बियरिंग। सो दिस विल बी द लाइफ ऑफ द बियरिंग इन मिलियन रिवोल्यूशन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। There is a relation between L10 and L10H. So this is the relation between billion revolution and the hours. Sometimes it is asked in question that what will be the life of the bearing in terms of hours. Suppose if million revolution is given, or you can easily find the value of million revolution or the life of the bearing in case of previous equation, then what will be the life of the bearing in hours? So if you go on simplify this equation, you can easily get the number of life in terms of hours. Here n is the RPM, that is the that the bearing tends to rotate, or the revolution per minute. Now moving on to average life. Average life means to say 50% reliability. 50% reliability. Reliability means to say the number of ball bearing or the number of balls tends to rotate n million revolution to
the total number of the bearing. L million deviation to the total number of bearing. This is called reliability. There is a relationship between the average life. There is a relationship between the average life and the life of the bearing, that is given by L50 divided by L10 is equal to 5. This equation comes from the previous equation, that is L50 divided by L10 is equal to log base E 1 upon reliability, that is 50%, divided by log base E 1 upon R90 to the power 1 divided by 1.17. If you go and simplify this equation, you will easily get this equation, that means L50 is equal to 5 times the life of bearing. So if you go on calculating this equation here, 1 divided by R50, that means 1 divided by 0.5, 1 divided by R90, that means 0.90. So this is the important equation. These two equations, this equation and the previous equation, that is the life of the bearing, these two important equations are generally asked in the previous year gate questions and in the coming exams also. So this L10 and L50 are the important criteria for determining the load life relationship of any ball bearing or rolling contact bearing. This is the important graph that importantly shows a relationship between a life of the bearing and the reliability of the bearing. Here L10 means 90% reliability. Here L50 means 50% life and 50%